Hello bachcho, let's read this question. So here we have two statements. Statement 1 says energy emitted when an electron jumps from 5 to 2 energy level. It is less than when electron jumps from 2 to 1 in all hydrogen-like atoms. And statement 2 is the mod of total energy difference. The modulus of total energy difference between first and second energy level is greater than that of any two energy level provided level 1 is not a part of these two energy levels. And we have four options regarding these statements. So here the key concept is energy of electronic transition in hydrogen-like species. Hydrogen-like species. So हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज दैट मीन्स जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं उनमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं एंड एज वी नो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर. We can give the formula for wave number as nu bar is equal to RH multiplied by Z square multiplied by 1 by N2 square minus 1 by N1 square. जबकि जो ट्रांजिशन हो रही है दैट इज फ्रॉम N1 to N2 where N1 is the higher energy level and N2 is the lower energy level. So उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव नंबर है दैट इज दिस. सो यहाँ पर हम अदर वैल्यूज को पुट करके उनके एनर्जी डिफरेंस वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर वेव नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज energy emitted when electron jumps from 5 to 2 is less than that of 2 to 1. So let us first determine the wave number of transition from 5 to 2 जो कि होगा RH multiplied by Z square. यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक एटम है so let it be Z square only multiplied by 1 by 5 square. So since यहाँ पर n2 n5 से 2 लेवल में जा रही है so we will do 1 by 2 square minus 1 by 5 square which is equal to RH. This is RH into Z square multiplied by 1 by 4 minus 1 divided by 25 and इसकी वैल्यू हो जाएगी RH multiplied by Z square multiplied by 21 divided by 100. ये है इसकी वैल्यू that is the wave number of transition of electron from fifth level to second level. In the same way, let us determine nu bar 2 to 1. So इसकी वैल्यू हो जाएगी RH multiplied by Z square multiplied by 1 by 1 square minus 1 divided by 2 square which is equal to RH Z square multiplied by 1 minus 1 by 4 which is equal to RH into Z square into 3 by 4. And अगर हम 3 by 4 को in terms of x by 100 express करें then this will be RH Z square multiplied by 75 by 100. So इन दोनों टर्म्स को हम कंपेयर करके देख सकते हैं जो 2 to 1 ट्रांजिशन हो रही है 2 से 1 उसकी एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा है दैट मीन्स ज्यादा एनर्जी एमिट हो रही है एंड वही गिवन है स्टेटमेंट 1 में दैट energy emitted when electron jumps from 5 to 2 is less than when electron jumps from 2 to 1. So statement 1 is true. Statement 1 is true. Then statement 2 में given है the mod of total energy difference between first and second energy level is greater than that of any two energy levels provided level 1 is not a part. So as we know जो Bohr energy levels होते हैं those are arranged like this one over another. This is n is equal to 1, this is n is equal to 2, n is equal to 3 and so on.
नाउ जितनी गैप बढ़ेगी एनर्जी लेवल्स के बीच में, उतनी ही उनकी एनर्जी डिफरेंस भी इंक्रीज होगी. So first let us calculate the energy difference between n is equal to 2 and n is equal to 1. So इस energy को हम calculate कर सकते हैं like this in terms of wave number. So wave number of transition of electron from 2 to 1 is same as the wave number of energy difference between energy level 2 and 1. So wave number of transition from 2 to 1, और यही हमने डिटरमाइन किया था. दिस वैल्यू इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 75/100 और आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 3/4. ये है यहाँ का वैल्यू. एंड जो अदर एनर्जी डिफरेंस हो सकता है, प्रोवाइडेड वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दीज टू एनर्जी लेवल्स, दैट मीन्स वन को हम कंप्लीटली एक्सक्लूड कर रहे हैं. दैट मीन्स जो भी ट्रांजिशन होगा दैट विल बी फ्रॉम टू, that will be involving 2 or other higher energy levels. Now n is equal to 2 से जो सबसे highest energy gap हो सकती है that is from n is equal to infinity. So n is equal to infinity और n is equal to 2 के बीच में सबसे ज्यादा energy gap होगी corresponding to और relative to the other energy levels जिसमें कि n is equal to 1 शामिल नहीं है. So let us determine that energy gap. So nu bar of infinite to 2, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, then we have RH multiplied by Z square multiplied by 1 by N2 square, that means 1 by 2 square, 2 square minus 1 by N1 square, that is infinite square, which is equal to RH into Z square multiplied by 1 by 4 minus 0, because 1 by infinity is 0. So this is equal to RH Z square into 1 by 4. So अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, एनर्जी लेवल और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 1 ये ज्यादा है, दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर. और हमने इसमें मैक्सिमम एनर्जी गैप कंसीडर किया था फ्रॉम एनी लेवल एंड n इज इक्वल टू 2 लेवल. सो एज यू कैन सी जो हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस है वो भी n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 1 के बीच में जो डिफरेंस है उससे कम है. सो statement 2 is also correct, that the total energy difference between first and second energy level is greater than any two energy level provided level 1 is not a part of these two energy levels. So statement 2 is true. Statement 2 is true. And statement 1 में जो given है that is just an application of statement 2, because statement 1 में given है जो energy difference है between 5 and 2 that is less than the energy difference between 2 and 1. और वही हमने यहाँ पर प्रूव किया दैट कोई भी एनर्जी लेवल हो उन दोनों के बीच में जो गैप होगा दैट इज लेस देन द गैप बिटवीन एनर्जी लेवल 2 एंड 1. सो वही गिवन है ऑप्शन ए में, दैट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1. So option A is the correct answer. I hope you understood the concept well. Best of luck.